So slides are visible. Slides visible है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good morning and welcome back to my YouTube channel Medical Classes by Dr. Srinidhi Kumar Acharya. Don't forget to subscribe my channel and also give your valuable comments. So today we will discuss about one of the important topics of comorbidity and also one of the hot topic of comorbidity presently, that is Swarna Prashanna. So we'll try to understand some of the core principles of Swarna Prashanna. ठीक है, everybody want to go for Swarna Prashanna, and we have got a lot of questions regarding Swarna Prashanna, how it will going to work, what is the basic principle of its mechanism, what are the mechanism of action, and how it will going to give the good results. So we will try to understand all these concepts in detail. So origin and practice of Swarna Prashanna. Now, Swarna Prashanna has been formulated based on the original reference of Kashyap Samhita Sutrasthana, Lehana Adhyaya, which mentions about Swarna Prashanna. ठीक है, ये जो है इसका बेसिक रेफरेंस है. Swarna Prashanna is basically mentioned in the Lehana Adhyaya of Kashyap Samhita in Sutrasthana, Lehana Adhyaya it is mentioned. Of course, जब ये काश्यप संहिता में जो मेंशन्ड है, दैट पर्टिकुलर मेथड इज ए वेरी क्रूड मेथड. जिस तरीके से स्वर्ण प्राशन देना है, अगर स्वर्ण प्राशन को देने का जो विधि है जो काश्यप संहिता में बताया है, दैट लुक्स लाइक ए वेरी क्रूड मेथड वेयर जस्ट यू हैव टू टेक स्वर्ण, आपको स्वर्ण को लेना है एंड इट शुड बी रब्ड अगेंस्ट ए हार्ड सरफेस. कोई भी स्टोन वगैरह हार्ड सरफेस के अगेंस्ट उसको रब करना है, and then it has to be mixed with the madhu and some amount of grita, and that is given for licking through the digits. Now definitely एक crude method जैसा दिखाई पड़ता है. This crude method has been now recently popularized. Now we have popularized this crude method into modernized method, and it is brought back into the mainstream and made available for all health aspirants. So problem क्या था, as this was crudely practiced, before popularization of Swarna Prashanna also this was practiced, but it was not universal, and people have got some doubt about that, and rather they don't had any proper information about that. Some of the traditional families they are doing, some of the traditional physicians are also practicing, but general people don't have an awareness of this. So to clear all these hurdles, recent days it is popularized, and again it is brought back into the mainstream so that it can be available for all the health aspirants. Now the procedure has been modified to certain extent and formulated as for the public need without altering the basic principle. So जब हमने इसका एक नया वर्जन लाया modified way में, the basic principles of आयुर्वेदा वेर केप्ट इन माइंड. हमने जो आयुर्वेद में जो बताया इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है और इसका एक्शन का जो मेथड है और इसमें जो फॉर्मेशन का उसका मेथड उसको अल्टर नहीं किया. हमने सिर्फ अकॉर्डिंग टू द पब्लिक नीड वी जस्ट मॉडिफाइड इट सो दैट इट इज इजीली अवेलेबल फॉर ऑल एंड इट इज इजी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो इट इज डन इन ए सिस्टमेटिक वे. So the altered form of same has been practiced in India with different names. Even before popularization of this Swarna Prashanna, previously also the same has been practiced in India, but the different names were given by different physicians. Some used to practice Swarna Prashanna in the name of Swarna Vacha, and some of the physicians used to practice Swarna Prashanna in the form of Swarna Bindu. Some used to give it is with Vacha. Vacha and Swarna is mixed together and given. And even in Sri Lanka, also this is practiced in a different way, almost a similar method like Ratha Kalpas. That is practiced in Sri Lanka like nation. So what I mean to say is previously also Swarna Prashanna was practiced,
but it is not practiced in an ordered way. Now it has been brought into streamlight, and it is all the efforts were made done to practice this in a very uniform way, and so that easily it is available for the public, and also public were made aware of this particular procedure. In some places, even nowadays also in a village area, if you go, the few practice the same with religious importance during Jatakarma or Namakarana Samskara. Nowadays also when you perform the Samskaras, especially the Jatakarma Samskara and Namakarana Samskara, nowadays basically it is practiced with the Namakarana Samskara. तो वहां पे जो है वो लोग जो है थोड़ा बहुत जो भी है अंगूठा है जो स्वर्ण से बना हुआ है उसको थोड़ा बहुत मधु और दूध के साथ घिस के और वो जो है आता है उसको जो है बच्चे को लिक करवाते हैं. But actually when they are practicing, they don't know any scientific importance. Just it is practiced as a ritual and also it is practiced as a religious procedure. That's all. And without any scientific knowledge and importance. Now let us see what are the benefits of Swarna Prashanna as mentioned in the classics. Then we will go for the basics, scientific understanding, everything. In this procedure of Swarna Prashanna, we know that this is explained by Kashyap Samhita. Swarna, that is gold, mixed with madhu and grita should be given for rubbing with the hard surface. Okay. And what is the Falashruti benefits of Phala Prashana which is given as per the classics is, this will definitely increase the cognitive power. But this not only increases the cognitive power of the child, but also it prevents the baby from many disorders by increasing the body immunity. The word like vyadibhir na gacchati. That means it will prevent so many common disorders of the childhood practice. Meantime, it also ensures the optimal metabolism of the body by correcting the Agni. If you see the Falashruti, it is very clear. Even it is beneficial to increase the Agni. Agni Vriddhi will take place. Graha. It is especially useful against the Graha. So as we compare these Graha Rogas for the practical purpose with the microorganisms or microbial infections, so one thing is very clear. When it says effective against the Grahas means it is effective against the microbial infection. So it helps to prevent the infective disorders also. Apart from that, classics also say that this Swarna Prashanna is also beneficial in increasing some of the physical properties of the child, like strength of the child. It is also increasing the complexion, varna, kanti, luster, etc. So by looking at this, it is not only limited to increase the cognition of the baby, it is also used to increase the immunity of the baby. It is also used to increase the metabolism of the baby, and it is also increased to prevent the microbial infections which is common in the childhood period. Apart from that, it also increases the physical strength, complexion. So it is having multifaceted benefits. This is not a one-way benefit procedure. It's having multiple benefits. So let us discuss that. Contextually, we know that Swarna Prashanna is considered as a Lehana procedure, isn't it? It's a Lehana procedure. It is also mentioned in the Lehana Adhyaya of Kashyapa. Now, Swarna is mixed with Madhu and Grita along with other drugs which are predominantly Medhya, Balya and Rasayana by action. Now, if you see the Lehana Adhyaya of Kashyap Samhita, Swarna Prashanna is mentioned, but in the same chapter, there are so many other Medhya drugs, so many other Balya drugs, so many other Rasayana drugs are used to give or to administer to the child in the Lehana form. Of course, जो स्वर्ण प्राशन जो बताया उसमें तो ये तीन ही ड्रग बताया उसने, स्वर्ण है और मधु है और घी है. बस जो लेहनाते में जो बाकी जो लेहन प्रिपरेशन है उसने जो बताया, फॉर एग्जाम्पल इवन संवर्धन घृत इज मेंशन्ड इन द सेम चैप्टर. ठीक है, तो so many other drugs are mentioned, like Balya drugs bhi hai, Medha drugs bhi hai, Rasayana drugs bhi hai. Okay, so what I mean to say is, we are taking Swarna Prashanna as individually, but if you take Swarna Prashanna as one of the
preparation which is mentioned in the Lehana Adhyaya, by taking the concepts of Lehana Adhyaya, आपको इस स्वर्ण प्राशन को मॉडिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है. ठीक है. सो उसने वहां पे जो बताया वो ठीक है, बट इसको आप बहुत अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि उसी अध्याय में बाकी जो लेहना ड्रग्स जो बताया है उसमें उसने बहुत सारे ड्रग्स को यूज किए. इसलिए इस प्रोसीजर में भी जहां पे सिर्फ स्वर्ण, मधु और घृत को बताया, वहां पे भी आप बाकी ड्रग्स को भी ऐड करके उसका पोटेंशियल को और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं. ठीक है. कि उसने जो बताया वैसा ही देना है बोल के कुछ नहीं है. उसने एक रफ मेथड बताया आपको कि स्वर्ण प्राशन को ये 3 बेसिक कंपोनेंट है, उसको इस तरीके से देना है. अब इसमें इसको और अच्छा मॉडिफाई अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि लेहन अध्याय में जो बाकी योग बताया है उसमें बहुत सारी चीजों को उसने ऐड किया है. मेद ड्रग ऐड किया, रसायन ड्रग ऐड किया. ठीक है. तो उसी को रेफरेंस को लेकर के यू कैन इवन मॉडिफाई द प्रेजेंटली, दैट मीन्स जो वहां पे जो स्वर्ण प्रश्न बताया उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. सो देयर इज लॉट ऑफ स्कोप फॉर द मॉडिफिकेशन टू एनहेंस द क्वालिटी. ठीक है. अभी तक कुछ सालों तक कोई किया नहीं है, इसलिए वो ऐसी रहा. बट इफ समबडी इज इंटरेस्टेड, definitely we can modify, because this is also the Lohana procedure and Swarna Prashanna is also a Lohana procedure. So there is lot of scope for the modification to enhance the quality. Similarly, drugs is aimed to both physical and mental well-being of the child. जो drugs यहाँ पे बताया, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल ग्रोथ के लिए है, वहां पे मेंटल ग्रोथ के लिए भी है, और एक तरीके से सर्वांगीण ग्रोथ के लिए. ओके, फॉर ऑल द फैसेट्स. सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग. But one thing you have to remember, Swarna Prashanna is not a one-time procedure. ये ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि एक बार ले लो और सब कुछ हो जाएगा. No, it is a long-term procedure. Okay, Swarna Prashanna is a long-term procedure, and which influence all-round development of the child. It has to be taken continuously. It has to be taken continuously. Okay, so these are some of the important facts regarding Swarna Prashanna that we have to make it very clearly. Because never it is told as one-time procedure, and the explanation suggests that it has to be taken continuously, and it has to be continued for a longer time. Because कोई भी cognition effect लाना है, किसी बच्चे का cognition को improve करना है, किसी बच्चे को physical strength को बढ़ाना है और immunity को बढ़ाना है, तो कोई एक डोज से नहीं हो सकता. Okay, it's not by one dose. We have to give in a small quantity for a long duration, in a particular age group of the child that we will discuss. ऐसा भी नहीं है कि आप 16-17 साल तक देते रहेंगे. नो, इट्स ऑफ नो बेनिफिट. देयर इज वन पर्टिकुलर पीरियड, उस पीरियड तक आपको कंटिन्यूअसली उसको देना है. दैट यू विल सी. सो मेक द ड्रग्स which are added in the procedure of making of this Swarna Prashanna may be helpful to produce the Medhya effect. That means probably they are good in producing the high quality of neurons. जो न्यूरॉन्स का जो हाई क्वालिटी न्यूरॉन्स को प्रोड्यूस करने में शायद वो हेल्प करता है, एंड फॉर दैट द कॉग्निशन पावर विल बी मोर इन द चाइल्ड. द ड्रग्स आर आल्सो मेंशन्ड फॉर द इंक्रीज इन द फिजिकल ग्रोथ, एंड ड्रग्स आर आल्सो मेंशन्ड टू इंक्रीज द इम्यूनोमॉड्यूलेटर एक्शन, इम्यूनिटी. सो एक्चुअली दीज 3 आर द बेसिक थिंग: कॉग्निशन पावर, फिजिकल ग्रोथ, इम्यूनिटी. ओके, these are the 3 main benefits of Swarna Prashanna. Now, how this will going to work? Swarna Prashanna is nothing but it's the one which gives a positive differentiation at the early stage. Now, we will try to understand this. And this slide is very, very important. The first 2 years of the life, the growth is maximum. Especially we know that in the first 2 years of the life of the baby, the growth of the brain is very, very maximum. We know that this is evidenced by increased head circumference in the first 2 years of the life. Okay. Similarly, first 2 years of the life is equally important for a child as immune system is also growing. You know that initially there is the thymus which is present, and thymus cells, T cells from the thymus, they go on proliferating everywhere, and immune system is building up, and this process is also taking place in the first 2 years of the life. Okay, that is immune proliferation, immune cell proliferation inside the body at different lymph nodes and all. So it is also the period of maximum differentiation of the neuronal and immune cells, as I told. So what we have to do is
an attempt should be done to produce high quality neurons and high quality immune cells so that child will be safe in the future. Because this is the right time where we can do it. ठीक है, आप इवन 7 years के बाद करेंगे भी ज्यादा बेनिफिट्स नहीं आएंगे. ठीक है, जो पहले का जो है immediately after the birth, the first 3, 4 or maximum up to 5 years is the period of brain growth. ठीक है, maximum brain growth. And if you alter the pattern of brain growth, that is pattern of formation of the neurons in this period, then you can able to produce the high quality neurons. Similarly, the immune cells, जो immune cells है, वो immune cells जो है उसको शुरू में आपने सेंसिटाइज कर दिया. ठीक है, कोई ना कोई, अभी उसका प्रिंसिपल हम आगे बताएंगे. इम्यून सेल्स को जो है बहुत सारे एलर्जिक सब्सटेंस का अगेंस्ट आपने सेंसिटाइज कर दिया, तो आगे जाके वही सेल्स प्रोलिफरेट होता रहेगा. तो वो लास्ट में ऐसे इम्यून सेल्स बनेंगे बॉडी में जो बहुत सारे एलर्जी के लिए ऑलरेडी सेंसिटिव है. वो आगे जाके जब कोई भी एलर्जिक डिजीज हो या इस तरीके का जो भी कोशिश हो, इंक्लूडिंग ऑटो इम्यून एक्सेट्रा, so that will going to prevent it because they are already get sensitized against it. But this is possible only when you give starting from the birth to first 5 years of the life. Even 5 years हम मैक्सिमम ले रहे हैं. मैक्सिमम जो ब्रेन ग्रोथ और इम्यून सेल का जो ग्रोथ होता है पहले 2 साल में. Now, thus the modulation is done through the procedure during the phase of cellular and tissue differentiation. That is, during the early childhood brings the positive growth. Okay. So the Swarna Prashanna with the multi-dimensional benefits may prove as an effective health and immune modulation procedure which imparts happy and disease-free life in the future child with the high levels of cognition. ठीक है, हम उसका एक नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं क्योंकि शुरू से ही जो इम्यून सेल्स है उसको हमने पहले ही सेंसिटाइज कर दिया है. ठीक है, क्योंकि जब एक सेल होगा तो उसके बाद उससे डिवीजन होगा, सेल्फ डिवीजन होगा, चलता रहेगा, उसका सीरीज बनेगा. हम क्या कर रहे हैं, जो इनिशियली जो सेल्स है हमारा बॉडी में एट द टाइम ऑफ द बर्थ, उसको हम ऑलरेडी बहुत सारा एलर्जी का अगेंस्ट या टॉक्सिक मेटेरियल के अगेंस्ट, ठीक है, उसको सेंसिटाइज कर रहे हैं. इससे क्या होगा कि वो सेल्स सेंसिटाइज हो गए और वो जो है एक हाई क्वालिटी इम्यून सेल्स बनेंगे और वो छोटा छोटा इन्फेक्शन को वहीं पे रोकेंगे and they are effectively able to perform the function of immune protection. Now, the bodybuilding, bulk promotion and enhancing the immune status of the child will be done by बल्य, जीवनीय and ब्रह्मणीय drugs. अगर इसी प्रिपरेशन में आप इस ड्रग को ऐड करते हैं, ठीक है, so you are definitely adding those drugs which will going to increase the cognition. वो कोई डाउट नहीं है because we know that. You are also adding some of the drugs or you making the combination so that body immune system or body immune cells, stem cells जो है, immune stem cells है, they are get sensitized. And you are also adding some of the drugs which are having balya, jivaniya and brahmaniya gunas, so that there will be a continuous growth, uninterrupted growth, and the baby will have a good future life. Now this is not a 1-day process or 2-day process. At least up to first 5 years of life, this has to be regularly given. Now, how you will give, whether you will give it by 1 month method or whether you will go for daily administration, that's a different issue. Because if you want to get different type of benefit, you have to administer it in different way. For example, if you want to have a cognition effect, it has to be administered continuously. What Kashyapa says is, Masat Paramamedhavi. Paramamedhavi, that means absolutely intelligent. Okay, extremely intelligent. Paramamedhavi ban jayega. So it may be little exaggerated version, but one thing it very clearly suggests that there is a definite effect over the cognition. ये cognition को तो बढ़ाता है. अगर cognition को बढ़ाना है, वो बोलता है कि continuously आप 1 महीने के लिए ले लो. दूसरा, अगर continuously 6 महीने के लिए आप देंगे तो ये क्या बनेगा, तो he becomes श्रुतधर. मतलब कुछ भी बोलो तो उसका रिटेंशन पावर इतना बढ़ जाता है, so he will have a high quality of retention power. So therefore administration is now continuous if you want to increase the cognition power. If you want to increase the cognition power. Now, if you want to increase the immunity of the child,
एडमिनिस्ट्रेशन में नॉट बी कंटिन्यूस, ठीक है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको डेली उसको जो है देने की जरूरत नहीं है। आप उसको एपिसोड मतलब आप गैप में दे सकते हो, मे बी गैप ऑफ 1 वीक, मे बी गैप ऑफ 2 वीक्स, मे बी गैप ऑफ 15 डेज और मे बी गैप ऑफ 1 मंथ, ठीक है। क्योंकि हमें वो इसलिए चाहिए, वो मटेरियल अंदर जाके जो है इम्यून सेल है उसको सेंसिटाइज करने के लिए चाहिए, तो वहां पे डेली देने की जरूरत नहीं है। दिया तो भी दिक्कत नहीं है, बट प्रोवाइडेड द डोज शुड बी मिनिमम। बट इफ यू वांट टू हैव कॉग्निटिव इफेक्ट एज मेंशन बाय कश्यप, कॉग्निशन इफेक्ट के लिए वो क्या बोलता है कि कंटिन्यूसली दे दो, मास सात परम मेधावी 1 मंथ कंटिन्यूसली, ओके। षड्वीर मास से शुद्ध, सो दिस इज वेरी क्लियर। एंड इफ यू जस्ट वांट टू हैव दी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए है, अग्नि बढ़ाने के लिए है, अगर देना है, सो देन ही हैज नॉट मेंशन्ड एनी पर्टिकुलर रेजिमेंट, कैसे देना है, कौन सा दिन, कितना दिन का गैप में बताना है या डेली देना है। सो दिस पॉइंट इज नॉट मेंशन्ड देयर, सो इट डिपेंड्स अपॉन द युक्ति ऑफ द पेशेंट, रादर फिजिशियन। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, इम्यून के लिए आपको देना है तो कंटिन्यूस लेने की जरूरत नहीं है, बट कंटिन्यूस दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। But if you are aiming to attain the cognition power, it should be given continuously. He told very clear. Okay, and again, this should be given in the early part of the life. लेट होने के बाद आप 10 साल के बाद दिया तो आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा और कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। But same if it is given in the early part, then it helps for the differentiation and sensitization of the immune tissue, differentiation of the neurons, so that high quality neurons can be produced. This is sure. Now, there is another samskara called as Jatakarma Samskara. Okay, so there is a lot of confusion is there. Even in Jatakarma Samskara also, which is performed immediately after the birth, Swarna is mixed with Madhu and Virudda is indicated as part of stimulating the feeding reflexes of the newborn and induce the effect of the trophic feed. Now, बहुत confusion है कि स्वर्ण प्राशन यहाँ पे बताया है और जातकर्म संस्कार में भी जो है हम मधु घृत चरक के अनुसार मधु घृत और स्वर्ण को मिला के हम देते हैं। एक तो वहां पे जो स्वर्ण जो अनंत था, जो वर्ड यूज किया है, उसके बारे में बहुत कॉन्ट्रोवर्सी, वो रियली स्वर्ण है या बाकी कुछ ड्रग्स है। एनीवे, अगर आप उसको स्वर्ण लेंगे तो भी जो जातकर्म संस्कार में मधु घृत और स्वर्ण को मिला के जो देने का प्रक्रिया है, दैट इज अ वन टाइम प्रोसीजर, ठीक है। वो भी जो है एक टाइम का प्रोसीजर है, बट रियल स्वर्ण प्राशन प्रोसीजर व्हाट वी आर फॉलोइंग, इट इज नॉट वन टाइम प्रोसीजर, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसीजर। और वहां पे जातकर्म संस्कार में जो मधुघृत प्राशन चरक के अनुसार जो हम कर रहे हैं, दैट इज जस्ट फॉर चेकिंग द फीडिंग रिफ्लेक्सेस। बच्चा अभी पैदा हुआ है और तुरंत जो है उसका फीडिंग रिफ्लेक्स वगैरह हमें चेक करने के लिए थोड़ा बहुत मधु और घृत थोड़ा स्वर्ण को मिला के हम उसको डिजिट में जा करके उंगली में डाल करके अंदर डाल देते हैं। तो बच्चा अगर सक कर रहा है तो ये हमारे लिए एक टेस्टिंग है, फीडिंग रिफ्लेक्स, फीडिंग, सकिंग, रूटिंग और उसका स्वेलोइंग रिफ्लेक्स सही है क्या। And if it is good, then we will proceed. Another is Jatakarma Samskara. The same material is also acting as a trophic feed. That we will discuss in another condition. Okay. So what I need to say is Swarna Prashanna, which is explained in the Lehana Adhyaya, and Swarna Prashanna, which is explained in the context of Jatakarma Samskara, they are different. They are different. So there should not be any confusion. There should not be any confusion. Now, all the procedures looks like same. It's the aim of that particular procedure is different. Now, Swarna has been referred as Ananta in the context, although the other interpretations like Sariva, Shweta Durva, ऐसे भी बोलते हैं उसको, इसलिए वो थोड़ा इसके साथ कंपैरिजन नहीं होगा। Now, Lehana is different from Jatakarma Samskara because Lehana is a long-term procedure and is explained for the growing kids, and this can be initiated right after the birth. That is true. Immediately after birth, even ये जो स्वर्ण प्राशन को भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। बट वो जातकर्म संस्कार में जो हम स्वर्ण प्राशन करते हैं उससे अलग, वो अलग, बिकॉज एम इज डिफरेंट। नाउ, कॉग्निटिव फंक्शंस ऑफ द स्वर्ण प्राशन का कॉग्निटिव फंक्शन, नाउ इट डेफिनेटली हेल्प्स टू इंक्रीज द कॉग्निशन पावर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑल्दो एक्सप्लेनेशन गिवन इन द क्लासिक्स परम मेधावी एंड श्रुतोधर थोड़ा बहुत एग्जैगरेटेड लगता है, बट स्टिल व्हेन दे से दैट देयर इज डेफिनेटली ए कॉग्निशन पावर, benefit on the cognition power, because procedure cannot yield uniform effect in all children. This should be known. Now, when I say it will going to give the cognition power, increase the cognition power, so we should not take that this procedure will give uniform effect to all the kids, because every
human being is different. Every child is different. There are so many other predetermined factors. There are so many other predisposing factors. There are so many other underlying factors which will going to affect the cognition of the baby. Okay, so there are some maternal factors also. Even Garbhavati is also responsible for the same. And even starting from Rajaswala Paricharya, Rutamati Paricharya, that is also responsible for the proper development of the psyche of the baby, mental capacities of the baby. Okay, the comfortable or uncomfortable antenatal period is also very important. Mother is doing always under stress, mechanical lifestyle, doing more exercise. So with all these things, you cannot expect a good cognition in the child. Okay, so therefore, although we say that it is increasing the cognition capacity, it is not uniform for all the children. This point has to be made understood to the parents when they're coming to you. So individual variation is there, lifestyle is there, genetic traits are there. Genetic traits, some are by birth itself they are genius, their family itself they are genius. So they don't want your Swarna Prashanna, otherwise also their cognition will going to increase. Some are very dull, some are of medium cognition, so which are mostly benefited by this. It is also depends on the nutrition of the child. Diet and nutrition is very important. You are giving Swarna Prashanna, but you are not providing good diet. Diet and important, some of the important proteins and essential fatty acids, they are very much important for the growth of the brain. Okay, suppose the child is not on breastfeeding, only taking Swarna Prashanna, you cannot expect that cognition will go into increase because breast milk is very much essential for the brain growth. So along with this breast milk, if you give this Swarna Prashanna also, then it is quite beneficial to increase the cognition power. Now, different combinations mentioned in the Lehana Adhyaya. If you see the different formulations or yogas mentioned in formula Lehana Adhyaya, the most of the drugs are Medhya in nature and which promotes the cognition property. Vacha is mentioned, Shankapushpa is mentioned, then so many other drugs are mentioned. Okay, and Medhya drugs bringing the Medhya drugs during the stage of the brain cell differentiation definitely will have the work. Okay, neurons are proliferating, new neuronal circuits are forming. In that time, you are giving some of the Medhya drugs and you are helping to produce the high quality neurons. Okay, so now first 2 years of the childhood witnesses maximum brain growth, as I told earlier, and Dallana says, one of the reference of Dallana says Lehana is best indicated during the first 2 years of the child. Okay, this is only mentioned in Dallana Tika says clearly Lehana is best indicated during the first 2 years of the life, and it is very correct because first 2 years of the life is the maximum brain differentiation period. Now again, the Grita is used here. So Grita is the best for enhancing the higher mental functions. If you see the indications of Grita and benefits of Grita in Ayurveda, Grita is the one which increases the mental faculty. Okay, it increases the dhi, it increases the dhruti, it increases the smriti, rasam shukrojasam param. Okay, so Grita is best for increasing the mental faculties. Okay, so because we can say it contains essential fatty acid, which is very important for the brain growth and all those things. Now this Masa Parma Medhavi and Shadbhir Mase Shutadara, we have seen that and its importance. Now we have already covered cognition part. Now we come to the immunity part. How a Swarna Prashanna will going to increase the immunity of the child? Lot of discussion is going on about the role of Swarna Prashanna in the immunity. No doubt, no problem. In the main shloka itself, it is told that the Swarna Prashanna is beneficial. Vyadibhirna drishyate. There is no affliction of the disorders or repeated infections will not be there or disease will not be there. And it is also told that child attains long lifespan, ayushyam, mangalam, punyam, long lifespan. So that is also mentioned. So again, the concept is same. When you give the Swarna Prashanna in the first 2 years of the life or first 3 to 5 years of the life, the immune cells are under the stage of differentiation. In that time, if you sensitize the immune cells, then its functioning increases. You are able to sensitize the T cells. T cells are the local police, we know that. Okay, so they are the one which attacks whenever any emergency comes, infection, etc. So we are increasing the T cell immunity. How?
So interfering during this phase with the frequent now cognition, how it works because of the Mayday effect, you know that. But drugs, how they are acting in immunity. Now this is very important, and most of us are get confused over here. Okay, so how this particular Swarna Prashanna preparation is able to sensitize the immune cells? This is the basic question and basic principle. So it will interfere with the sensitivity of the immune cells. So what we are doing is, suppose any immune cell, if it is frequently exposed to mild antigenic exposure, listen carefully, if any immune cell is exposed to mild antigenic exposure, it will lead to the prior sensitization of the immune system against that particular substance, which is opposite to the Dehadhatu. So this is explained in the Virudda Ahara context of Charak Samhita. What he says, Dehadhatu pratyanika bhutani. That means when you administer a mild antigenic substance in a very small dose daily or in frequent intervals, then it sensitizes the body cells and it helps to prevent the future disorders. That means this particular mild antigenic substance will be reacting with the body immune cells and sensitizing them, so that in future, if the same type of, same variety or same species of substances again come back to the body to cause the problem, it will be prohibited because immune cells are already sensitized against that. So in this context, if you see, it is very clear that that is Swarna Prashanna, is having some antigenic property. Okay, so it is having some antigenic property. When it is taken inside, body immune system try to treat it as an enemy, and they will have a reaction with that. And as a result, what happens? Immune system is get sensitized against that particular allergic, toxic or whatever material. And this is the concept. Same is told in the Virudda Ahara context also. Now, question is, mode of action of Swarna Prashanna to increase the immunity. How a Swarna Prashanna preparation will go to increase immunity by inducing the antigenic property. हम तो अब तक क्या बोल रहे थे, ये तो जो है रसायन है और ये जो है आपका बल्य है, जीवनीय ड्रग्स है, मेदे ड्रग्स सब कुछ इसमें है. तो अब हम बोल रहे हैं कि ये एक एंटीजेनिक सब्सटेंस है. एंटीजेनिक मतलब बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. बॉडी तो इसको बाहर फेंकेगा. बॉडी इम्यूनिटी ये आते ही जो है बॉडी इम्यूनिटी जो है एक्टिवेट हो जाएगा, उसको बाहर फेंकने का कोशिश करेगा. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. Now to say this, we have to go with different theories to prove this. How this particular will have antigenic effect. So hypothesis related to Virudda. So we have 4 or 5 important theories to prove that Swarna Prashanna has got an antigenic effect, and so that Swarna Prashanna will going to increase the body immunity. And we know that present today the concept of vaccination, what they are doing, they are also doing the same thing. They are introducing some antigenic substances inside the body in a particular dose, in a particular day and time, and that will go inside the body. Body system is get sensitized against that, so that in future that particular target disease is prevented. Okay, so we are in Ayurveda, we are not telling that any particular target disease, but again the concepts that I will go to explain further. So that shows that looks like it is also acting on the same way by sensitizing the body immune cells. We shall see one by one. These are some of the important hypothesis, and these are all the hypotheses. Okay, nothing has been proved by the research activities. Okay, these are all the hypothesis we are making. This has to be proved by different research activities. What is one first hypothesis is related to Virudda. Okay, antigenic stimulation of immunity. Second one is theory of Virudda Abhisamskriti. Third one is hypothesis of Ahita and Asatmya substance.
Fourth one is hypothesis of Ojo Vardhan. And fifth one is theory of immunomodulation effects of Swarna Basma and Swarna. Theory of, so these are the five important hypotheses we are put forwarding to prove the immunological effects of a Swarna Prashanna. Okay, first we'll go with this theory of Virudda, Ahara and Swarna Prashanna. See, Virudda Ahara, we know that Virudda Ahara is yat kinchit dosham utklesham bhuktam kaya na nirharet tad vikaraya kalpate. That means Virudda Ahara is that substance which does the vitiation of the doshas at subclinical level and does not cause the disease even if it is taken daily in minute quantity. That means after intake of Virudda Ahara, incompatible substances, English translation, it's not the correct translation of Virudda Ahara. Okay, incompatible substances, compatible substances. Now, when you take Virudda Ahara, it will go into vitiate the body doshas, but it will not cause any disease. That suggests that it will cause some fluctuation in the doshic homeostasis. In other words, this Virudda Ahara will go into shake the immune system or make the immune system stimulation at once. But as it is taken in a very small quantity, it will not cause any disease. Virudda Ahara, then disorders will not be there. If it is taken in a continuous high dose, that may cause Virudda Ahara. That's a different issue. So what happens? Always when you take a Virudda Ahara, it always acts as a mild antigenic substance. That Virudda Ahara will go into fluctuate the body doshas. Therefore, definitely, dosha pratyani ke bhutani, deha dhatu pratyani ke bhutani. It is definitely against the bodily tissues, dhatus and doshas. Therefore, it is causing that antigenic effect. And body is reacting against that. Okay, so it acts as a mild antigenic substance. So material which is against the bodily biological factors, it is a natural tendency that body always resists these materials due to its antigenic nature. कोई भी चीज जो बॉडी का विरुद्ध में हम लेंगे तो एक बार जो है बॉडी उसको रेजिस्ट करेगा ही, उसको रोकेगा ही. यही तो इम्यूनिटी है. This is immunity. This is the function of the immune system. Okay. Similarly, when you take the Virudda Ahara substance, body immune system will go into resist it. उसको रोकेगा. And there will be fluctuation of the dosha subclinical level. Subclinical level इसलिए कि वहां पे डिसीज नहीं है, बट एक माइन्यूट लेवल पे जो है, लोअर लेवल पे माइन्यूट डिग्री का जो सबक्लिनिकल फ्लक्चुएशन या इन्फेक्शन तो हो रहा है, या जो भी है फाइट हो रहा है, इम्यूनोलॉजिकल एक रिएक्शन तो हो रहा है. नाउ how we can take this particular theory into Swarna Prashanna? Now this is very important. I think today we will complete this portion, and in the next class onwards we will go with the other theories. The repeated administration of such antigenic materials slowly help in modulation of the immune cells during the stage of the differentiation. इस तरीके का जो माइल्ड एंटीजेनिक सब्सटेंस को आप जो है बॉडी इम्यून सेल जब प्रोलिफरेशन वाला स्टेज में है उस टाइम में अगर आप देंगे तो क्या होगा, बॉडी इम्यून सेल्स उसे रिएक्ट करेगा और बॉडी इम्यून सेल सीख जाएगा इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को या एंटीजेनिक को ओवरकम कैसे करना है. वो इस हिसाब से अपना नया सीरीज ऑफ सेल्स को बनाएगा. तो क्या होगा, बॉडी में नया सीरीज ऑफ सेल्स बनेगा जो इंप्रूव्ड वर्जन है, और आगे जा करके उसी का प्रोलिफरेशन होगा. और इन फ्यूचर कोई भी अगर इन्फेक्शन हुआ या कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस या एलर्जिक सब्सटेंस आया या विरुद्ध आहार लाइक सब्सटेंस आ गया तो उसको रोकेगा. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ थिंग इज excess administration or intake may lead to the Virudda Ahara Vyadis, as I told earlier. Hence, it reduces the severity and complication in future. This is also told. And same has been referred as Puram Abhisamskaram Sharirasya by Charaka in Virudda Ahara. वो सब ठीक है, पर स्वर्ण प्राशन जो हम बना रहे हैं वो कैसे एक एंटीजेनिक बन सकता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. तो इसका मतलब है हम ये बोल रहे हैं कि स्वर्ण प्राशन का जो मटेरियल है जो बना वो एक विरुद्ध आहार है, वो एक विरुद्ध आहार. अच्छा, वो देखेंगे कैसे.
See, Swarna Prashanna also aim to attain the immunity in the same approach. कैसे? एक्चुअली यहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखना है. स्वर्ण प्राशन में मधु और घृत को मिलाना है और उसका डोज नहीं पता है, और शास्त्र क्लियरली बोलता है मानम न उक्तम समम ग्राह्यम. देयरफॉर द मधु एंड घृता शुड बी टेकन इन इक्वल क्वांटिटी. So when you mix madhu and ghrita in the equal quantity, it will act as either matra or संयोग विरुद्धा. एक विरुद्धाहार यहां पे हो गया. ओके, वन टाइप ऑफ एंटीजेनिक प्रोडक्ट इज फॉर्मड हियर. ये एक एंटीजेनिक जैसा काम करेगा, कोई डाउट नहीं है. वन थिंग. ओके, नेक्स्ट, हम लोग जो है स्वर्ण भस्म को यूज कर रहे हैं, बट काश्यप ने कभी नहीं बोला कि स्वर्ण भस्म को यूज करना है. तो स्वर्ण प्राशन का जो प्रोसीजर, बेसिक प्रोसीजर में, इनिशियल प्राइमरी प्रोसीजर में उसने क्या बताया, स्वर्ण हैज टू बी टेकन. ही डिडंट मेंशन दैट इट शुड बी शुद्ध स्वर्ण. उसमें ये भी नहीं बताया कि स्वर्ण भस्म, उसने ये भी नहीं बताया स्वर्ण चूर्ण. उसने तो बताया कि क्रूड स्वर्ण को लेना है, दैट मीन्स इम्प्योर स्वर्ण को लेना है. जो इम्प्योर स्वर्ण है, जो प्यूरिफाइड नहीं है, वो तो डेफिनेटली एक विरुद्धा है. वो एक डेफिनेटली विरुद्धा है. दिस इज सेकेंड हो गया. हम जो यहां पे यूज कर रहे हैं स्वर्ण, वो भी है ऑफ कोर्स. स्वर्ण चूर्ण का वर्षन आता है सुश्रुत में. स्वर्ण चूर्ण हैज टू बी यूज्ड बोल के कुछ प्रिपरेशन में, जो चार बेसिक स्वर्ण प्रिपरेशन जो सुश्रुत बोलता है, तो वहां पे स्वर्ण चूर्ण वर्ड आता है, बट काश्यप पे नहीं है. काश्यप वेरी क्लियरली सेज, काश्यप व्हाट ही सेज इज, काश्यप इज वेरी क्लियर, इट शुड बी अशुद्ध स्वर्ण. ठीक है, क्रूड स्वर्ण का ही बात करता है, और स्वर्ण को ले लो और पत्थर से घिस के आप कर लो. ओके, दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट विच कॉजेस स्वर्ण एंटीजेनिक नेचर. विरुद्धाहार बन गया यहां पे भी. तीसरा, वी आर टेकिंग मधु इटसेल्फ, एंड इफ यू टेक द मधु एंड सी द स्पेशलिटी ऑफ द मधु. मधु जो है बेसिकली, हनी इज बेसिकली इन प्लांट ओरिजिन एंड इट इज ऑल्सो एन एनिमल ओरिजिन. ठीक है, so it is there in the flowers, therefore it is plant origin, and it is taken by the honeybees and enter into the mouth of the honeybees and mixed with the saliva of the honeybees, therefore it is also animal origin. And in the plants, what happens is honeybees collect the madhu from the different flowers, and different flowers are having different virya, vipaka, etc. कोई है तो साउंड म्यूट कर देना. तो डिफरेंट फ्लावर्स आर हैविंग डिफरेंट वीर्या, विपाका, रसा, एक्सेट्रा. सो व्हेन दिस मधु ऑफ डिफरेंट फ्लावर इज हैविंग डिफरेंट वीर्या, विपाका, हनी बीज क्या कर रहे हैं, उसको कलेक्ट कर रहे हैं और एक ही जगह में रख रहे हैं. तो वहां पे क्या हुआ कि अलग अलग गुण वाला, अलग अलग गुण वाला, अलग अलग रस वाला जो मधु कलेक्ट किया अलग अलग फ्लावर से, वो सब एक ही जगह में इकट्ठा कर दिया. वो तो एक बहुत बड़ा मेगा मिक्सचर हो गया विरुद्धाहार का. वहां पे गुण विरुद्ध भी हो रहा है, रस विरुद्ध भी हो रहा है, वीर विरुद्ध भी हो रहा है. ठीक है, उपचार विरुद्ध भी हो रहा है. सो दिस इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ विरुद्धाहार. मोर ओवर दैट, मधु इज ऑल्सो एन एनिमल ओरिजिन. व्हेन इट इज मिक्सड विद द सलाइवा ऑफ द honeybees, honeybee saliva, it contains very allergic substances which is called as pollens. नाम सुने होंगे आपने, pollens. So they are present in the salivary gland of the honeybee. Now pollen is most allergic substance. अब इस मधु में pollens भी ऐड हो गया. Now we have got madhu and घृता as a antigenic property viruddhahara, and we have got impure gold, and we also got madhu which is a mega antigenic, animal और प्लांट ओरिजिन का मिक्सचर है. और वापस प्लांट ओरिजिन में अलग अलग फ्लावर्स का अलग अलग वीर्य, विपाक का मिक्सचर है. वापस एनिमल ओरिजिन में जो है एनिमल्स का जो पोलन जो है, बहुत सारे बहुत ही एलर्जिक सब्सटेंस है, वो भी ऐड हो जाता है. यू नो, जो मधुमक्खी का जो बड़ा वैरायटी है जो जंगल में रहता है, जब एक बार वो काटता है तो एनाफिलेटिक रिएक्शन हो जाता है. वो इतना एलर्जिक है. ऑफकोर्स वो छोटा वाला जो मधु भी है उसमें इसका अमाउंट इतना ज्यादा नहीं रहता है, और बड़े वाले में बहुत ज्यादा रहता है. इसलिए एक मधुमक्खी अगर काटा ना वो बड़ा वाला, तो भी इट मे लीड टू डेथ. मेनी टाइम्स इन द पेपर द रिपोर्ट्स आर कमिंग.
सो इट इज हाईली एनर्जिक. ऑफ कोर्स जो माइल्ड वाला वेराइटी है, छोटा मधुमक्खी, इसमें इतना एनर्जिक नहीं है. So now what happens? This particular mixture what is preparing, that becomes a perfect combination of Virudda. इसमें सभी टाइप का एलर्जी आपको मिलेगा. पॉलन की एलर्जी मिलेगा, ठीक है, मधुग्रस्त से आया हुआ एलर्जी मिलेगा, गोल्ड से रिलेटेड एलर्जी मिलेगा, ठीक है. एलर्जी मीन्स दैट जो विरुद्धाहार का कॉन्सेप्ट है वो मिलेगा. Now if you administer this particular antigenic combination, एक जो बहुत मेगा मिक्सचर है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हर टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी, हर टाइप का एलर्जिक का ये सब्सटेंस थोड़ा थोड़ा मात्रा में इसमें है. इसको जो है व्हेन यू एडमिनिस्टर इन अ सिस्टमैटिक वे, दिस कॉम्बिनेशन एक्ट एज एन एंटीजेनिक सब्सटेंस विच इज एबल टू स्टिमुलेट द बॉडी इम्यून सिस्टम. आप डेली इसको दे रहे हैं तो धीरे 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 करके ये सभी जो है विरुद्ध आहार के अगेंस्ट बॉडी सिस्टम को वो एक्टिवेट करता रहेगा. एंड बॉडी इम्यून सिस्टम इज proliferating and that will help the immunity. So repeated administration in a calculated dose and a fixed interval will going to help. Similarly, modulation of differentiation of the immune cells for the different antigenic substance, toxic and allergic substance will going to happen. This leads to continuous circulating antibodies against the commonly exposed pathogens or allergic substances or which is present in the nature and food, etc. Combination is given with the madhu, which itself is an antisense substance. मैंने बता दिया. So further, Swarna is known for its immunomodulatory action. अब यहाँ पे controversy. If you take Swarna, modern science says, आप पुराना वाला रिसर्च निकाल के देखेंगे, Swarna gold has been used for immunosuppression activity. It is used in rheumatoid arthritis as a disease modifying agent. वहां पे क्या है कि Swarna जो है डिसीज को मतलब इम्यूनिटी को सप्रेस कर, इम्यून सप्रेसिंग एजेंट के रूप में उसको यूज किया है. मतलब जहां पे ऑटो इम्यून जैसा रिएक्शन हो रहा है, इम्यून सिस्टम ज्यादा एग्जैगरेट होकर काम कर रहा है, तो वहां पे उसको सप्रेशन करने के लिए गोल्ड को यूज किया है. अभी जो रिसेंट जो कुछ आ रहा है जो आर्टिकल्स, उसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि गोल्ड इज हैविंग इम्यूनो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी. तो वहां पे वो बोलते थे कि इम्यूनो सप्रेस जस्ट लाइक स्टेरॉइड, इट इज यूज्ड एज इम्यूनो सप्रेशन. वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज पेनिसिलामाइन, और उसके बाद आपका जो है ये डिसीज मॉडिफाइंग एजेंट्स है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज करते हैं. आप देख लो पुराना वाला टीएमएआरडी ना. हाँ. सो देयरफॉर गोल्ड इज आल्सो यूज्ड एज अ प्रीवियसली इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन. ठीक है. सो जो एग्जैगरेटेड इम्यून रिस्पॉन्सेस जो होता है तो वहां पे गोल्ड का यूज होता है. नाउ देयरफॉर इवन टुडे आल्सो हमारे पास बहुत सारे गोल्ड का प्रिपरेशन है, रशिया से बहुत सारे गोल्ड प्रिपरेशन. Okay, and we have got so many disorders in the present day practice which are immuno-exaggerated disorders. For example, autoimmune disorders. So, according to me, even today also, one of the best medicine that we can give in autoimmune disorder is a gold preparation. It is gold preparation, although it is told as rasayana. By taking in account of the research activities which took place and proved research work for the immunosuppressive action of the gold, it is equally beneficial in autoimmune disorders. Okay, so this is the explanation why the immune system is modified by administration of Swarna Prashanna, and thus we can claim that our drug is able to increase the body immunity. And this is that particular shloka which is mentioned in Charak Samhita Virudda Ahara. Deha dhatu pratyanika bhutani dravyani deha dhatu bir viroda mapatyate परस्परम गुण विरुद्धानी कानिचित. माने देह धातु प्रत्यय, देह धातु के लिए जो विरुद्ध है ऐसा जो द्रव्य है जब आपने अंदर ले लिया तो वो देह धातु से विरोध को प्राप्त करेगा. मतलब वहां पे फाइटिंग होगा. क्यों होगा? परस्पर गुण विरुद्धानी, ये दोनों को गुण अलग है इसलिए वहां पे फाइटिंग होगा. कानिचित संयोग, कुछ लोग हैं इम्प्रॉपर संयोग से, इम्प्रॉपर कॉम्बिनेशन इसे होगा. संस्काराद अपराणी, संस्कार भी उसकी वजह से होगा. ठीक है. देश काला मात्रा भी शरणी ही इतना स्वभावत अपराणी. तो सभी ये क्लियर कट श्लोक है. तो इसका ट्रीटमेंट उसने बता दिया क्या है, क्या करना है उसका ट्रीटमेंट. यथा भूतानि द्रव्याणि देह धातु विरोधमापद्यते तदा हम
परस्पर विरुद्धानि कानिचित। अब यहां पे क्या बताया कि उसी द्रव्य को जो है थोड़ा मात्रा में बार बार देने से क्या होगा कि इसी द्रव्य के ऊपर बॉडी में इम्यूनिटी आ जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस श्लोकास एंड दैट इज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट डे वैक्सीनेशन। बट वो हम आई एम नॉट टेलिंग दैट स्वर्ण प्रश्न इज फॉर मोर देन vaccination. Vaccination is limited to one particular disease. Okay. Here, Swarna Prashanna is having a generalized immunity or non-specific immunity for all the types of disorders. So this is the first theory of what you say Swarna Prashanna for its immunological benefit. The second theory, etc., we will see in the next class. So with this, we conclude this class. Thank you very much. Don't forget to subscribe my channel and also give the comments. Thank you very much. We will meet in another class with the continued portion of Swarna Prashanna. Thank you, sir.